Assalamualaikum everyone, my name is Hurya Akram and you're watching HL Learning Studio and I warmly welcome all of you guys over here. So welcome back as we were talking about the pronoun and we were talking about the parts of speech. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नाउन को आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसी तरह मैं आप आज बताने वाली हूँ कि आप प्रोनाउन को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। मतलब हम बात कर चुके हैं नाउन की, वर्ब की, तो अब बारी है प्रोनाउन की। Because the pronoun is also part of speech and most of the time we use this word in this sentence while making conversation with anyone, while talking to our family, while talking to our friends, and while explaining anything that we are talking about. We mostly use this word. So actual pronoun होता क्या है? Pronoun हम ऐसे word को कहते हैं जो कि noun को replace कर दे. I mean a word that replaces the noun. फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब किसी चीज़ में हम बेटर हो जाते हैं या फिर कह लें कि उसे एडवांस या फिर डेवलप करते हैं तो उसे कहते हैं कि ये प्रो है। मतलब एक चीज़ है एक सिंपल, उसको हम एडवांस वे उसकी जो इम्प्रूवमेंट करते हैं या फिर उसे रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उससे बेटर चीज़ में, या तो उसे हम क्या कहते हैं कि दैट इज प्रो। जैसे कि बहुत से मोबाइल्स के वर्जन आते हैं। इन द सेम वे यू कैन रिमेंबर द प्रोनाउन कि एक सिंपल किसी चीज़ का नाम, चीज़ या मतलब जगह को, किसी चीज़ के नाम को हम कहते हैं ये नाउन है। मतलब किसी सेंटेंस में अगर वो यूज हो रहा है तो वो नाउन है। बट अगर हम उसकी जगह पे एक ऐसा वर्ड यूज कर दे जो उसको रिप्लेस कर दे, मतलब हमें वो नाम या फिर वो बोलना ना पड़े, उसकी जगह पे एक सिंपल वर्ड, मतलब ही, शी, इट, दे, इस तरह के वर्ड अगर आप यूज करेंगे तो दैट विल नाउन एज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मरियम इज रियली अ नाइस पर्सन और मरियम इज रियली अ नाइस गर्ल, सो इसकी जगह पे अगर आप मरियम को रिप्लेस करके वर्ड कहेंगे शी इज अ नाइस गर्ल और शी इज रियली अ नाइस पर्सन, सो इन दिस वे यू हैव रिप्लेस्ड द वर्ड मरियम विद शी. I hope you guys have got it and how we can use the pronoun in the sentence. मैंने अब आपको बता दिया कि किस तरह यूज करते हैं। अब आपकी बारी है कि कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस तरह कर सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई मिस्टेक आप करते हो तो इंशाल्लाह I will try my best to make it correct as much as I can. So let me know in comment section that how you can replace the word, noun with a pronoun. If you like this video, give a thumbs up to it. If you're watching me for the first time, then subscribe my channel to get more videos like that. Inshallah, see you soon in my next video. Till then, take care, goodbye. Was a girl with good intentions, yet she made some bad decisions, and she learned to